Hello, everybody. I hope all of you are doing good, and I hope all of you are taking care of your health while you're focusing on your studies. Okay, then. So today we are going to start with 7.6, extremely easy exercise. थोड़े rules follow करेंगे तो exercise हमेशा ही easy होती है, correct? So 7.6, before we start 7.6, what did we learn until now? Correct? So taking a recap of what we did in 7.1, as you know, 7.1 was an exercise which was completely based on use of formulas. Correct? Then 7.2, we had this exercise which was based on substitution. सब्स्टिट्यूशन जहां पे हम लोग t लेते हैं, फिर उसको उसका भी डेरिवेशन, वी फाइंड आउट d by dx and then we go ahead. Correct? 7.3 is completely based on trigonometric functions, so that's trigonometric functions. 7.4 उसके दो पार्ट में आपको वीडियोस बनाए हैं मैंने, which are those special form of functions. कौन से फॉर्म थे वहां पर? It was integration of 1 by q, integration of 1 by root q, integration of L by q, and integration of L by root q. Correct? And then last exercise we did, which was 7.5, which was based on integration by partial fractions. Correct? Partial fractions क्या होता है? We saw it was partial fractions, which was it was a function which was p by x by q by x. So whenever we get a partial fraction function, or sum where the degree of p by x has to be less than q by x, जब degree less नहीं होती है, ज़्यादा होती है, then we divide the numerator by the denominator and so on and so forth. We solve it. Correct? तो यहाँ तक I think all of you have understood everything, and now we go ahead and we do the next exercise, which is 7.6, and 7.6 exercise is integration by parts. This is integration by parts. Okay. बहुत मजेदार है ये, very nice and easy also. So integration by parts. When do we use integration by parts? Integration by parts is used, generally it is used when we have product of two functions. When we have an integration of product of two functions. जब भी हम लोगों के पास दो functions है and we have a product of those functions. Like in derivative, we had the product rule, correct? Derivative में we had a product rule. Remember, we had when you have to find out d by dx of the product of two functions. So we had a product rule, correct? u square v plus v square u, correct? But in integration, there is no such thing as product rule, correct? So that is why here we find out an integration of, suppose u and v dx. So u is a function. So suppose ऐसे ले लो कि u is a function f of x, correct? And v is a function g of x, correct? If this is the case, correct? So understand, if you consider this as your first function and this as your second function. Okay, then see, अभी जो formula हम करने वाले हैं to solve integration by parts, it is more convenient to say this formula exactly the way I am saying it. Try to do it exactly the same and you will remember it more easily. Okay, you will say this formula exactly the way I am saying it. कैसे बोलेंगे इसे? So it is integration of u dot v dx. So how to say this? Okay, it is first function as it is, first function as it is, into integration of second function, into integration of second function, minus यहाँ पे कर लेते हैं, into integration of second function minus the
माइनस द होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे मैं साइन डालूंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function, करेक्ट, इसका आएगा होल dx, करेक्ट. अब इसको symbolically we will write down. How to write this down? See, this is integration of u dot v dx. See how to write this? First function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of first function into integration of second function, the whole dx. Getting it? So this is how you write it. Every time when you say this formula, try to say it exactly the way I said it right now. That's the easiest way. With experience, I can tell you that is the easiest way to remember this formula. Correct? बस इतना ही है ये, और इसी पे हम लोग सारा सम्स करेंगे. First question we will do right now. Example करते हैं, कैसे करेंगे? So for example, suppose we have to find out integration of suppose we have to do integration of x cos x dx, correct? Now this is the function that we have. Now see, with all this that we have learned right now, we can solve this probably even without using integration by parts, but हमको यहाँ पे parts, we have to do it with integration by part. Now you can select which should be your first function. कैसे select करेंगे इसे? How to do that? So for which we have I-let, correct? So how to select the first function, the second function? Okay, I-L-A-T-E, correct? We know what it is, right? So basically I is equal to what? I is equal to inverse trigonometry function. Okay. Then L is equal to log function. A is equal to algebraic function. T is equal to trigonometry function. E is equal to exponential function. Now, which function should be, हम लोग पहले second function choose करेंगे. Once we have the second function, तो first तो अपने आप से ही आसान हो जाएगा, correct? So basically, if we follow the rule of I-let to choose the first and the second function. कैसे करेंगे उसको? You will look from the right. Right means what? From here. अच्छा, पहले तो इसको separate करते हैं. X is what? X is algebraic function. And cos x is trigonometry function, correct? Now, from the right, which function comes first in your question? That will be your second function. So ye apna, this is right. If you look from the right, then trigonometry is coming first. So aapke function mein trigonometry is this, that will be your second function. So automatically the first will be this, correct? I hope you're getting it, correct? Right, say you can check from the right, and whichever function from the right comes first in the I-let format, that will be your second function in the sum, correct? I think that's not very difficult. दो चार sum करेंगे ना अपने आप से, you will get it, correct? Whichever is on the right is the second. दूसरा तरीका है ऐसा, उसको उल्टा अगर आपको करना है कि आप check from the left, whichever function comes first on the left will be your so considering that x is going to be our first function and cos x is going to be our second function, we are now going to apply the formula that we had, correct? And what is our formula there? So let's erase this. So otherwise I'm just going to shorten this thing. Okay, and you all can write it because that's a reference that you need, and we have to manage the place, right? So now we know which is our first function and we'll define it here, correct? So this is what we do with the I-let.
And let us take that our u will be x and our v is going to be cos x, correct? Now, what is the function? What is the formula? Let us say the formula exactly the way. The more number of times you say the formula, the more number of times you will, exactly like that, you'll remember it, okay? You have to say it. Do not use any other method to use this formula. Just say it exactly the way I'm saying it right now, which is integration of u dot v dx is equal to first function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative or of the first function into integration of the second function, the whole dx. Correct? It's become very easy now because हमको सिर्फ क्या करना है? We just have to substitute our values here and the answer will be automatically there. So we have x into cos x. X into cos x, first function as it is, into derivative of the second function minus the whole integration of derivative of the first function into integration of the second function, the whole dx. Perfect. Now, so this will be equal to x into derivative of cos x will be what? Derivative of cos x is equal to sin x. This is equal to sin x minus integration of, what is this? Derivative of dx by dx is 1 into derivative integration of cos x is going to be sin x and this is dx. So what do we have here now? We have x sin x minus integration of sin x dx. Perfect. I think until here, I don't think there should be any trouble to understand anything, correct? Now, this is equal to x sin x minus derivative of sin x is minus cos x, minus this will become plus cos x plus c. C is still there because we are doing indefinite integrals, correct? So this is your final answer. I hope all of you have understood what we are doing. It's not at all difficult. काफी आसान है. वो formula you have to remember and we'll be able to do it, correct? Now, does this mean we cannot do it in, if we don't take x as our, this does not mean that we cannot take x as our second function. We can take, ये सब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, that you can take u as cos x and you can take v as x, और फिर भी कर सकते हैं, लेकिन but the problem is that it will complicate, it will become lengthy, correct? So if you use this method, the sum becomes easy. Okay, so to select which function should be our first function and which function should be our second function, then it will complicate, correct? Do you all think that we can integrate each and every function that we come across? ऐसे लगता है आपको? Is that the case? So the answer is actually no. We cannot integrate all the functions that we come across. We cannot integrate each and every function we come across simply because हमको दे दिया है क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं. सपोज अगर आपको किसी ने ऐसे क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स dx, and how will you integrate this now? क्योंकि it is not possible. This function actually speaking to be उसका derivative निकालना of some function only, then see this function has to be a derivative of some function, correct? So ये function किसका derivative है? So it complicates things, correct? So because of which it is necessary for us to identify, and we are right now what we are trying to see, we are trying to see that the sums become easier. So by choosing the right function first, the first function, the second function, choosing them correctly, it will make your sums easy, correct? As you keep on doing more and more sums, we will be able to do, you'll be able to understand the integration by parts very easily. Sure. Let's go to next function. Let's next sum, sorry. Okay. Want to integrate log x dx. Guys,
Are you realizing in the entire integration chapter, actually, are we integrating log x for the first time? Probably yes, we are integrating log x for the first time. Integration of 1 by x is log x, log of mod x. But log x का integration क्या है? वो तो हमने अभी तक ढूंढा ही नहीं, वो फॉर्मूला भी नहीं है. तो and look at this function, सिर्फ log x है. We said that we can use integration by parts when we have a product of two functions. But now here we can see that it is only one function. तो क्या करेंगे यहाँ पर? जब भी whenever you have such a sum, एक नंबर हमारे हेल्प के लिए आता है, which is 1. 1 will always help you. So since we have to do this as a product, so what we will rewrite this as integration of 1 into log x dx. आप 1 पहले रखो, बाद में रखो, it really doesn't matter. कहीं पे भी रखो, क्योंकि बाद में तो you have to use eyelet and you have to solve it only with the help of eyelet. Correct? Now let's see how to do this. So, okay. Which function will be eyelet? IL integrate ITF. So just see ILATE. What is 1? 1 is algebraic function, correct? 1 is constant algebra mein aayega, right? Algebraic function. So if you write ILATE, so this comes as your second function and this comes as your first function. Are you realizing? That means we are going to say that our u is equal to log x this time. And our v is equal to x, correct? Sorry, 1. Now let's implement this in the formula. Formula kya hai? Ek baar bolte hain. Okay, this is equal to integration of u into v dx is equal to first function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of the first function into integration of second function the whole dx. Perfect. So now we only have to put up this whole thing in this formula and use it. So what are we going to do here? So we will say integration of, see abhi hum log 1 ko v le rahe, so I'm going to write down this as log x into 1 dx is equal to first function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of first function into integration of second function the whole dx. Can you see? It looks really very easy. बहुत आसान दिखता है ये अभी, because we know what we are going to do now, correct? So this is going to be log x into integration of x, integration of 1 is x minus the whole integration of derivative of log x will be 1 by x, correct? Into integration of 1 will be x, correct? और इसका आएगा full dx. So this x and this x will cut. What are we left with? We are left with log x into x minus integration of 1 dx. This will be what? This is log x into x minus x plus c. यहाँ पे x will come common into bracket log x minus 1 plus c. This is your answer. Correct? Quite easy, I think, right? ज़्यादा difficult तो वैसे भी नहीं है. और देखो, try to do this again by yourself. Every time in all my lectures I have been saying that try to do this sum by yourself. It will be more beneficial that way. आप अगर सिर्फ ऐसे करोगे कि मेरा देखकर कॉपी करोगे लिखोगे, वो ज्यादा देर नहीं चलने वाला, करेक्ट? आपको फिर याद नहीं आएगा, बिकॉज ये मैं सोच रही हूँ, आपको भी तो सोचना चाहिए कैसे करना है, करेक्ट? अगर आप नहीं सोचोगे तो ये नहीं होने वाला है. आपको खुद को करना चाहिए, खुद से करो, तब जाके. मैथ्स इज अ सम, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जहां पे यू हैव टू डर्टी योर ओन हैंड्स. मतलब खुद के हाथ से गलतियां करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि सम्स आगे कैसा करना है. बिकॉज in mathematics, as it is important for you to know
what to do when you see a sum. It is more important to know, or rather it is also important to know what not to do. क्योंकि जब आपको what not to do पता चलता है तो what to do also automatically पता चल ही जाएगा. So you don't have to specifically remember. तो you have to do mistakes. You have to learn only through doing mistakes. एक सम 2 बार 3 बार गलत जाएगा, never mind, but still keep on trying. Don't give up. Okay. Now, integration of, let's see, x into bracket, sorry, x into e to the power x dx. आप सब लोग मेरे हेल्प के बिना ये कर सकते हो, एक्चुअली स्पीकिंग. करेक्ट, जरूरत ही नहीं है इसकी मेरी. क्या करेंगे? विच विल बी फर्स्ट? e to the power x automatically will be the second function. So your u will be x and v is equal to e to the power x. चलो फटाफट एक बार फॉर्मूला बोलते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ u dot v dx is equal to first function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of the first function into integration of the second function, the whole dx. I am writing this formula again and again and saying it because actually I want you all to do that. आप लोग इसे करो इस तरह से, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रहेगा. Now we have integration of u into e to the sorry, it is x into e to the power x dx. This is equal to what? First function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of the first function into integration of the second function, the whole dx. देखो भाई, सबको देखकर ही पता चल गया है कि क्या आने वाला है. x into e to the power x minus derivative of, this is 1 into e to the power x, correct, dx. इसके जितना आसान सम भी नहीं है ये. दिस इज लाइक अ 1 मार्क सम. e to the power x minus, this is integration of e to the power x, जो वापस e to the power x ये आएगा, plus c, you take e to the power x common, inside you have x minus 1 plus c. This is your answer. Cakewalk. करेक्ट. डिफिकल्ट है ही नहीं, डिफिकल्ट बनाना भी नहीं चाहिए. करेक्ट. सोच आधा टाइम तो हम लोग सोचकर डिफिकल्ट बनाते हैं. करेक्ट. कभी कभी होता भी है कोई सब, ऐसा नहीं है, होता है. बट क्या है, मैथ्स है, करना तो पड़ेगा. ठीक है. अब जाके ये मत सोचो क्यों लिया मैंने मैथ्स, क्या फायदा ही नहीं हुआ, ऐसे सब सोचने की जरूरत नहीं है. अभी लिया है, करना पड़ेगा. करेक्ट. चल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन. ओके, क्या है? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x. देखो ITF आया यहां पर, इसकी कमी थी. करेक्ट. इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. चलो, क्या है ये फंक्शन? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Correct. One of the best questions actually in integration by parts. Okay. Now remember, whenever you have an ITF, inverse trigonometry function जो आपके पास है, then most of the cases you can solve them by substitution. Correct. The sum becomes जो आपका क्वेश्चन दिया है वो मैनेजेबल हो जाता है अगर आप इंटीग्रेशन यूज करते हो तो. करेक्ट. सी, वी कैन सॉल्व दिस सम बाय यूजिंग आईलेट. करेक्ट. एट दिस स्टेज. Okay, but the sum at a point will become complicated. At certain point it will become complicated. Correct. कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आगे जाके, हमको लगेगा फिर क्या करें, अटक जाएंगे कहीं पे. तो और कॉम्प्लेक्स हमको चाहिए नहीं. कुछ भी जो भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, हमें वो काम करना ही नहीं है. उतना टाइम हमारे पास नहीं है. हमको चाहिए एकदम इजी, एब्सोल्यूट इजी. किसी भी चीज को बिना कॉम्प्लिकेट करे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन और फिर इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे. तो कैसे करेंगे सॉल्व? क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन में? अरे आंखों देखा है साइन इनवर्स को टी लेते हैं तो इजीली हो जाएगा. करेक्ट. सो वी विल से लेट साइन इनवर्स x equals t. Correct. That means 1 by
root of 1 minus x square is equal to dt by dx. That means dx is equal to dt into root of 1 minus x square. Easy हो गया. Now the क्यूट लगता है ये क्वेश्चन. अभी लगता है कि बस अभी कर ही डालेंगे. करेक्ट. कैसे करेंगे इसके हम? सो लेट अस से सब्स्टिट्यूट करो. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स की जगह पे डालेंगे t. करेक्ट. डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या बचा अपने पास? मेरे पास बचा देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस इज गॉन. अब सही लग रहा है कि नहीं बता. ये हमारे पास कितना आया? x इंटू टी डी टी. करेक्ट. यस. अब t क्या है? व्हाट इज अवर t? वापस सब्स्टिट्यूशन करके वापस लेके आते हैं क्योंकि हम लोग इसको x और t में तो सॉल्व नहीं कर सकते. करेक्ट. सो वी हैव टू ब्रिंग बैक t. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx. अब बराबर लग रहा है. राइट. वेट, उसको एक काम करेंगे. नहीं तो विल डू वन थिंग. सी यहां से लेते हैं. 1 सेकेंड. आई विल डू वन थिंग. इसको t से ही सॉल्व करेंगे. देखो, नाउ वी हैव टेकन अवर सब्स्टिट्यूशन एज साइन t. ओके. यहाँ पे नाउ if you take sin t, sin inverse x is equal to t. So can I take therefore that x is equal to sin t? This will be easy. Correct. X is equal to sin t. We can take it that way. Correct. Instead of going back to the same thing, what we will do here instead is we will convert this into integration of x के जगह पे हम लिखेंगे sin t. अभी आसान हो जाएगा ऐसा. Into is equal to t dt. Now it's easy. अब तो हमें पता है इसको कैसे करना है. करेक्ट. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन अब बताने की जरूरत नहीं. विच विल बी योर फर्स्ट फंक्शन? आईलेट को यूज करो. आईलेट फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? आईलेट में t. तो साइन t विल बी योर सेकंड फंक्शन एंड t विल बी योर फर्स्ट फंक्शन. करेक्ट. सो वी कैन टेक u इज इक्वल टू t एंड v इज इक्वल टू साइन t. करेक्ट. आईलेट यूज करेंगे तो राइट से हमें देखना है. विच एवर फंक्शन कम्स फर्स्ट फ्रॉम द राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आया, दैट विल बी योर सेकंड फंक्शन. नाउ इट बिकम्स इजी. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू टी इज ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन टी डी टी is equal to first function as it is into integration of second function minus whole integration of क्या आएगा? whole derivative of the first, अभी dt आएगा. करेक्ट. derivative of the first function minus into integration of the second function the whole dt. यहाँ पे dt आएगा. Correct. Now this is equal to integration of t into sin dt. This का answer is going to be t into minus cos t. Correct. Minus, देखो यहाँ पे what will you get? Into this is going to be 1 into integration of sin. That is equal integration of sin dt. What is integration of sin dt? That's going to give you cos t minus cos t. Correct. Minus cos t dt. Correct. अब ये माइनस बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा. This will give you what? This will give you minus t cos t minus this will become plus. Integration of cos t will be sin t. Correct. Are you getting it? Plus c. अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते हो. यू कैन राइट डाउन दिस एज साइन टी माइनस टी कॉस टी प्लस सी. करेक्ट. यू कैन अरेंज इट. नॉर्मली आई लाइक टू अरेंज दिस लाइक दिस बिकॉज नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर पहले हो तो अच्छा लगता है. वी कैन लीव दिस आंसर एज इट इज. सम हियर यू विल लूज 1 मार्क. यहाँ पर आंसर आ गया अपना. यहाँ पे
आंसर नहीं आया अपना यहाँ पर। कितने लोगों ने बॉक्स किया मेरा देखकर? ये आंसर अपना नहीं आया भाई। अपना क्वेश्चन एक्स में है ना, उसको टी में नहीं छोड़ सकते हम, करेक्ट? उसको वापस हमको टी में लाना पड़ेगा, करेक्ट? तो क्या करेंगे हम? वी आर गोइंग टू ब्रिंग बैक, तो आई एम गोइंग टू पुश द बोर्ड अ लिटिल ऑन द लेफ्ट, करेक्ट? एंड देन आई मिनिमाइज द स्क्रीन so that all of you can have one glance of the sum, correct? तो इसे we have to bring this back to our normal situation, क्योंकि we started the sum with what? We started the sum with x. Okay, तो कैसे करेंगे? Let's see. So we have, तो इसे sin t, तो देखो माइनस टी पहले तो, okay, we will keep it from here, we will do it from before arranging. Okay, sorry, that was before arranging. देख लेते हैं. Okay, तो माइनस टी cos t, okay, माइनस टी is equal to minus sin t, correct? Now minus sin t, no, क्या लिया है हमने? 1 second, let me just check. Minus sin inverse t, sorry. So minus t is equal to minus sin inverse t, correct? That's equal to minus sin inverse, oh, error पे error, minus sin inverse x. Okay, so this is equal to minus sin inverse x. And what is cos t equal to? Cos t, cos t is equal to, see, we have we can write cos t as we can write cos t as 1 root of 1 minus sin square t, correct? And 1 minus sin square t, मतलब that is equal to sin square t. Sin square t का मतलब क्या होता है? sin square, that is x, no, that is 1 minus x square, correct? So this is equal to, see, क्योंकि listen, sin t, we have taken sin t is equal to x, no, here sin t is equal to x. Can you see? This sin t is equal to x, that means sin square t will be x square, correct? So that means what we can take here, we can take cos t, we can write down as root of 1 minus x square. Getting it? अभी हमारा आंसर आ जाएगा. How will you write it? So this is going to be, so we have basically just arrangement ही ये करना है हमें. तो we can do this as cos t को लिखेंगे. Okay, that means cos t is equal to 1 minus x square. So now let us arrange the, and sin t is equal to x. So यहाँ पे sin t is equal to x, correct? So our answer will be what? Sin t. So our answer will be minus sin, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे लिखे. आई थिंक आ जाएगा ना. 1 second, कभी कभी ना, I really have to manage the board when it's moving. So write it in a different color, so you will get it. So answer will be, our final answer we can write down as minus sin inverse x, correct, root of 1 minus x square plus x plus c, correct? Minus sin inverse x plus c, correct? Sin t लिखा है हमने, right? T, see, we have t because sin t is x, correct? Sin t is x. ये t का we got this as minus sin inverse x. We got cos t as under root of 1 minus x square, and sin t we have as x, correct? So this will be our final answer, correct? समझ में आ रहा है कि नहीं? I hope you're getting the hang of it, all of you. ये मिनिमाइज करके देखो, आपको अगर पता चल रहा है कि क्या किया है हमने, करेक्ट? Are you getting it? एक बार देखो एंड खुद से भी ट्राई करो. कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी यू नो वी अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स इट हैपेंस दैट व्हेन वी आर नॉट यू नो काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन इट, तो हो जाता है. कभी मेरे से भी ऐसा गड़बड़ हो जाता है. लेट्स सी, वी विल, सॉरी फॉर दैट, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट ओके. चलो, लेट्स डू दिस. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. ओके, तो करेंगे एक एग्जांपल उन्होंने दिया यहाँ पर, which is integration of e to the power x. हाँ ये ओके, integration of e to the power x sin x dx. ध्यान देना, ये सम है, बड़ा मजेदार. इसे बोलेंगे हम, दिस इज इक्वल टू i
is equal to integration of e to the power x sin x dx. That means अभी here we have to take first function, second function. सोचने की जरूरत ही नहीं है. E to the power x is our second function. So I'm going to rewrite this as, इसे rewrite करते, इसे यहाँ पर ही rewrite करेंगे. Correct? So let's rewrite this as sin x into e to the power x. Correct? It's one and the same. e to the power x लिखो या वैसे लिखो. It's one and the same. आपको गड़बड़ लग रहा है, अगर किसी को confusion हो रहा है तो we can just write it back to the same thing. e to the power x. इसी से भी continue कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. We can just continue this with the same thing. Correct? So I is equal to this. So अगर इसको we know that our u is equal to sin x and v is equal to e to the power x. So इसका आंसर कैसे आएगा फिर? If you integrate this, I is equal to okay, let's integrate this. This is equal to what? First function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of the first function into integration of second function, the whole dx. Correct? Now that means what are you getting it? I is equal to, इसे कैसे कहते हैं? Okay, let's see where we land. You will come to know. Okay, this will be what? Sin x into e to the power x minus integration of sin x का derivative कितना आएगा? It will be cos x into e to the power x. अरे ये क्या हो गया? देखो, we again landed up into what? We again landed up into product. Of two functions. तो वापस उसको यही करना है. See, here in this case, what we are going to do, we will, okay. We can just do one thing here. Okay. So here we have again landed into a partial fraction, sorry, into integration by parts. Cos x into e to the power x is again a product of two functions, correct? So what we are going to do here, we will call this as I2. ये तो I है. We will call this as I, correct? I2. Let's solve I2 now. I2 यहाँ से solve करेंगे हम लोग, right? So I2 will be, so what is our I2? Solving I2, integration of, yeah, okay, solving I2. Our I2 is integration of cos x into e to the power x dx. Our first integration is going to be our u here. Our u is going to be cos x and v will be e to the power x. Correct? I hope everybody is getting what we're doing here. Okay. Now let's start this. Directly formula use karenge. This is equal to what? This will give you first function as it is into integration of second function minus the whole integration of derivative of first function. Derivative of first function into integration of second function. आपको अगर confidence आ जाता है तो आप directly लिखोगे फिर भी no problem, correct? This will give you what? This will give you cos x into integration of e to the power x will be e to the power x minus derivative of cos x will be minus sin x minus this will become plus, correct? This will be integration of sin x into e to the power x. Now ये क्या आया देखो, we again got what? This is our I, no? That's exactly where we started with. This is our I, correct? E to the power x into sin x or sin x into e to the power x. It's one and the same. So this is our I, correct? Yes. So, okay. Now let's write the whole thing again. We have got here, correct? So we are going to write down I is equal to sin x into e to the power x
माइनस, ये ब्रैकेट में आएगा, दिस विल बी cos x इंटू ई टू द पावर x, क्योंकि इसको सॉल्व किया ना, वी सॉल्व दिस I2, करेक्ट, यू हैव टू राइट I2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और वी कैन राइट डाउन सीधा, वी कैन राइट डाउन प्लस I, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट डाउन प्लस I, करेक्ट. Then let's open the bracket. I is equal to sin x into e to the power x minus cos x into e to the power x minus I. Correct? This I and this I we can get together. We'll get 2I is equal to sin x into e to the power x minus cos x into e to the power x. Correct? Now, I'll minimize the board after we finish it to a point. Correct? That means, okay, यहाँ पे we can very clearly see that e to the power x is common. Correct? Can you all see e to the power x is common? Inside the bracket, you'll have sin x minus cos x. Correct? So, we can say 2I is equal to e to the power x into bracket sin x minus cos x. Correct? And then you get the 2 here. I finally is equal to e to the power x into bracket sin x minus cos x by 2. Correct? Now, I hope you all have understood this. ज़्यादा complicated नहीं है वैसे देखा जाए. You get the same function again and then you replace that function by I, क्योंकि हम लोग we have called that first as I. Correct? Beautiful sum. Try to do it by yourself. ऐसे बहुत सारे sums आपके टेक्स्ट में भी है. आप जैसे जैसे करोगे आपको पता चल जाएगा. करेक्ट? चलो एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग. फर्स्ट लेट अस फिनिश द एक्सप्लेनेशन, देन वी विल डू द एक्सरसाइज. करेक्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. अभी यहां तक सारा सब कुछ एवरीबडी गेटिंग हाउ वी आर डूइंग इट? ओके. नाउ देखो, if we have an integral of the type of integral that we are going to see right now. कैसे? Suppose if we have integration of e to the power x into f of x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश x. अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन है, अगर आप यू आर सॉल्विंग इंटीग्रेशन एंड व्हेन यू कम to see, when you observe that this is the type of integration that you have come across, you can directly write the answer without solution. This is a one marker, e to the power x into f of x plus c. Correct? f थोड़ा अच्छा लिखेंगे. Okay, f of x plus c. Correct? This is how it is. Correct? बस. तो now suppose for this we'll do a sum based on this. तो आपको पता चलेगा. Suppose आपके पास एक sum है that you have integration of e to the power x into bracket. You have to observe the sums, okay? So you will come to know that this is existing or not existing. Suppose sin x plus cos x. अगर ये आपके पास एक question है dx, तो फिर क्या करेंगे? Correct? Question actually दिखता difficult है एकदम. It is a cakewalk question. जरा भी difficult नहीं है. देख लो यहाँ पर क्या है. What you can take? ये if you take this as your f of x, then this will be your f dash x. Correct? Sin x का डेरिवेटिव cos x. तो आंसर क्या लिखोगे? It is e to the power x sin x plus c. Finish. Solve तो करने की जरूरत ही नहीं है. So why is this happening? This is because we are getting this by using the same product formula. ये कैसे आ रहा है आपको पता है? अगर आप इस पूरे सम को if you try to do it with u dot v dx formula, you will land up to the same thing. But इतना लंबा हमको करने की जरूरत नहीं है. That is why you have to observe sums. One more thing which is very important in maths, when you do sums at any level, when you do sums in mathematics, it is important that you observe your sums. अगर आप sums observe नहीं करोगे तो आपको वो sums समझने में भी उतनी ही मुश्किल होगी. Are you getting it? तो you have to observe. Eyes and ears open रखो. जैसे जैसे eyes and ears आप open रखोगे तो
आपको पता चल जाएगा। इसका प्रूफ जरूरी नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू अननेसेसरली वेस्ट टाइम इन शोइंग द प्रूफ, तो आप प्रूफ स्किप कर सकते हो। प्रूफ नहीं आता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन आता है। इसका प्रूफ तो आई डोंट थिंक दिस प्रूफ इज कमिंग इन। ओके, तो वी विल डायरेक्टली डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ, दिस इज यू कैन से अ फॉर्मूला या वन मार्कर का शॉर्टकट, कुछ भी बोल सकते हो, करेक्ट। तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन देयर। इसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके नीचे करेंगे कि फ्रेश पेज लेते हैं क्या, छोटा सा समय, देन नो नीड फॉर द फ्रेश पेज। चलो, तो करेंगे एक क्वेश्चन। ओके, सो सपोज वी हैव e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan इनवर्स x, e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस, ब्रैकेट में डालेंगे ना, ओके, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आई डोंट थिंक यू इवन नीड माई हेल्प, राइट। व्हाट इज दिस, आपको पता है फंक्शन क्या है। अगर आप देखो तो tan इनवर्स x अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके लिए आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है। आई होप उतना तो आपको आना ही चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस सी जरूरी है, करेक्ट। ओके, नाउ सी व्हेन, अभी और एक विल, इजी है, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली केक वॉक, करेक्ट। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। व्हाट इज इट, सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ से x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर, and this is into e to the power x dx, correct. Now see, when we have such sums, when they come in front of you, you will have to sit and think. कैसे, which exercise, अगर ये एग्जाम में सम आए तो क्या करोगे, आप सोचोगे 7.1 है क्या, ये 7.2 है क्या, कैसे लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कुछ है क्या, डेरिवेटिव जैसा कुछ दिख रहा है, कैन आई डू समथिंग, इज देयर समथिंग। नाउ वी विल डू दिस सेम थिंग फंक्शन, ओके, एंड डेरिवेटिव विल कम अप। देखो कैसे करेंगे इसको, अगर आप इसको सोचते बैठोगे तो you'll have to associate this with different exercise that we did before, correct. तो we will try and see how to get it into the form। कौन सा फॉर्म कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल तो हम कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, e to the power x into f of x plus f dash x, करेक्ट। तो इसको ये फॉर्म में तो लाना जरूरी होगा। कैसे लाएंगे इसको इस फॉर्म में, लेट्स सी। so we can do, this is equal to x square plus 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे वी कैन डू प्लस 1 एंड माइनस 1। इफ यू डू प्लस 1 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में e टू द पावर x बाय x प्लस 1 तो होल स्क्वायर dx, करेक्ट। तो फिर वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 by x plus 1 the whole square into e to the power x dx, correct. अब न्यूमरेटर सेपरेट कर सकते हैं, कैन वी सेपरेट द न्यूमरेटर, सो वी कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे फिर 2 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू, ये इसको टोटल ऐसे करके इंटू e टू द पावर x dx, करेक्ट। नाउ ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई कैन राइट डाउन दिस, वी कैन राइट डाउन एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx, करेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x प्लस 1 कट हो जाएगा, correct. This and this will cut. What are we left with? We are left with integration of x minus 1 by x plus 1 plus 2 by x plus 1 the whole square into e to the power x. Okay. Now
देखो, इफ यू टेक दिस एज द फंक्शन और इस पे अगर आप कोशेंट रूल लगा दो तो आपको ये डेरिवेटिव मिलेगा। ट्राई करो, देखो, यू कैन ट्राई इट आउट, यूज आप लगा के देखो। मुझे पता है ये ऐसे आने वाला है। इफ यू टेक दिस एज द फंक्शन, करेक्ट, देन इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, देन दिस इज द डेरिवेटिव। अगर मतलब इफ दिस इज द फंक्शन, इफ यू टेक दिस एज एफ ऑफ एक्स सपोज, ओके, इफ यू टेक, आप सब लोग अपनी अपनी तरह से, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, यू कैन यूज द क्वोशंट टूल एंड चेक दिस। इफ दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, देन दिस इज योर एफ डैश एक्स, करेक्ट। आई होप सबको क्वोशंट रूल पता है क्या है, करेक्ट। क्वोशंट रूल लगा के देखो। दैट मीन्स अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा? पता है कि नहीं पता है? कि करके देख रहा है सबको क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल आना चाहिए। डेरिवेटिव किया है ना सबने, क्या है क्वोशंट रूल, सबको पता है कि नहीं? करेक्ट, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v, करेक्ट। सबको पता होना चाहिए यार, ये रफ में करते हैं, चलो इधर नहीं करेंगे, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v। क्या है ये? दिस इज इक्वल टू u डैश v माइनस v डैश u, करेक्ट, u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज, तो ये सेम लगेगा ना, ये u है आपका और ये v है, तो डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्टली लगा दो चलो अभी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u? डेरिवेटिव ऑफ u विल बी 1, करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ u विल बी 1 इंटू v। v क्या है? x प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ v भी 1 ही आएगा, देखो, डेरिवेटिव ऑफ v इज 1 इंटू x माइनस 1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या है? x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो दिस विल बी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये कट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सेम है यहाँ पर, करेक्ट। बट ये आपको खुद को आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो देन व्हाट इज आवर आंसर? देन कैन वी राइट आवर आंसर? देयरफॉर आंसर इज गोइंग टू बी e टू द पावर x इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या है अपना? x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी डू दीज सम्स, करेक्ट। आसान है काफी। देखो, आसान काफी तो तब होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये मेरे बोलने से, मेरे करने से अगर आपको आसान लगता है तो बहुत मुश्किल है। आपको खुद को करना चाहिए। यू, अनलेस यू डू इट योरसेल्फ, it is not going to work out, correct? Everybody see how the sum, just single glance of the sum, are you guys getting it? Correct? तो यहाँ पर अपना 7.6, we finish with 7.6 and now we are going to start with 7.7. धीरे 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 we are finishing all that we have for definite integrals. Indefinite integrals is getting over. I hope by now you have got the understanding of the topic. आपको पता चल रहा है धीरे धीरे ये कैसे करना है, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, करेक्ट। बाकी सब वीडियोस भी देख लेना कैसे हमने किए हैं, करेक्ट। क्वेश्चंस अगर नहीं आता है तो लेट मी नो। एक्सरसाइज भी सोल्यूशन आई विल पुट इट अप, बट राइट नाउ फर्स्ट अप आई एम पुटिंग अप all the explanation. Get to the explanation, gradually we will also do the exercises, correct? Then you can associate the exercises with the explanations, correct? All right then, thank you so much. Bye bye you.